जय हिंद, भारत माता की जय। नेवर से डाई शो का एक नया एपिसोड के साथ मैं डीपी सिंह आपके सामने फिर से हाजिर हूं। टुडेज पर्सनालिटी is not only famous for his bravado, he's a Shaurya Chakra awardee, but now he's becoming famous in his civilian avatar for his compassion when he's reaching out to all those widows and families who somehow got left out. What is he doing and how did he won Shaurya Chakra? We will discuss all that. Before that, let's welcome Colonel Shankar Shaurya Chakra on the show. Welcome to the show, sir. Jai Hind. जय हिंद मेजर डीपी। बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आपके साथ ये गुफ्तगू कर सकता हूं एंड इट्स इंडीड अ ग्रेट प्लेजर टू बी इंटरेक्टिंग विथ यू and for me you're an inspiration and I'm sure you're a great inspiration for a lot of youth in India and it's indeed a great pleasure for me to be in this show. I'm honored, sir. Thank you so much. Thank you so much for the kind words. Sir, you are from a totally non-Fauji background. How did you get motivated to join forces? Well, that's true. I don't have anyone in the armed forces. I'm completely from a civilian background. तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था चेन्नई में। चेन्नई आई वाज बोर्न इन कलकत्ता बट आई ग्रू अप इन चेन्नई। और मैं जब आई वाज इन अबाउट फोर्थ या फिफ्थ then I was part of the Boy Scouts movement, and that was my exposure to uniform and outdoor life and camp life, and that was really exciting for me. The kind of brotherhood that we had, the adventure, and of course, these were pre-internet days, and our only exposure to the armed forces was Republic Day parades. And I used to be, filled with pride listening to the gallant actions of a lot of soldiers, which they used to announce during Republic Day parade. And also, there used to be a serial called Paramveer Chakra, which inspired me. And of course, comic books, Amar Chitrakatha was a great inspiration for me. And that's what motivated me to join the armed forces. I had very less knowledge about rank structure, modes of entry, and things like that. But I wanted to somehow serve the country as an army personnel. And that's how I got into the army. You joined Dogra Scouts. Now, Dogras are from hilly region के जो soldiers हैं वो Dogra Scouts में आते हैं. And you are from down south. Total different language, total different culture. How did you adapted yourself? Oh, well, absolutely. You're absolutely right. In fact, my unit was a very, very specialized unit. It was Dogra Scouts, which is always in a high altitude area where the troops are also from, 10,000 feet and above is their houses. And we used to operate at higher altitudes. And I was from actually zero sea level from Chennai, who had not been in the mountains. Food habits were different, language is completely different. But that's the greatness of the armed forces. Once you become an officer, once you get commissioned as an officer and join a particular regiment, आपको जो पलटन में जो सिखाते हैं, जो कैमराडरी होता है, जवानों के साथ मिलजुल के रहना, और मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर थे और बाकी जो सीनियर जेसीओ वगैरह थे, जो कलीग्स थे मेरे, उन्होंने मुझे काफी कंफर्टेबल फील कराया और बेसिक आर्मी ड्रिल्स अच्छा सिखाया उन्होंने. And that's how I got, adapted to their lifestyle, got to know about their culture. And I still, till today, cherish the wonderful food of the Dogra region, palda or, all those lovely madra, which was a wonderful food they used to have. And the culture, the song, and the way they are full of joy de vivre. And this was something that was taught to me by the troops. And I should make a special mention. In the army, it's not always the seniors who get you bedded into the Paltan. I was put under a senior JCO who was much junior to me in rank. He was a JCO, but he was my first tutor. And I used to, listen to whatever he used to say so that I could get accustomed and acclimatized to the kind of lifestyle that my troops were. And what your troops are is what you become as an officer. So it was an interesting journey, but it's in my heart always, and Dogras have always been in my heart. Great, sir. Great knowing that. Now, coming to that operation, sir, which got you Shaurya Chakra, the third highest peacetime gallantry award. Can you throw a little light about what happened during that operation? And I also want to know, is it that easy
when the militants are firing from all around, to stay in that calm and cool posture, how difficult it is to keep that calmness in your mind. Oh, well, I was commissioned in 1997, and in 1998, we were deployed in Jammu and Kashmir in a counter infiltration role. So, one of the information that we got that were some militants or terrorists had crossed over to the Indian territory. And I had just about 1 year of service, and we took out multiple ambushes. And in one of the ambushes, we went out on a particular day, and on the third day, we encountered these terrorists. And this was at about what, 13,000 feet in Jammu and Kashmir. And of course, initially, I was filled with a little bit of anxiety, fear, unknown things. But that's when the training comes in, and it's how quickly you can adapt yourself from that situation. And we encountered them. I mean, we saw them at about early morning at about 4:45. But we started moving and pursuing them only once the daylight broke out, and they saw us first and they fired at us. And like what you mentioned, it's very important to keep calm, but it's all very good to say on paper to keep calm and things like that. And initially, I was also filled with anxiety. It was excitement, anxiety, fear, all mixed in, because it's the first time feeling bullets being fired at you. This is not a range. And I was a little anxious, and within about 10 or 15 seconds, I had already poofed off about 1.5 magazines, which is about nearly 30 rounds. One carries about 100 rounds of 100 bullets. And along with me, we were all split up. We were just about 11 of us, and we were all split up in different groups. And along with me was just a young sepoy who was a radio operator. And his job was to maintain communication throughout, so that in any contingency, casualty, or we needed any reinforcement, he was the man who could communicate, help me communicate to the headquarters. And he was the one who said, "Saab, आप रोक लीजिए, ऐसे फायर करेंगे तो बुलेट्स खत्म हो जाएंगे आपके." खाली हो जाएगा. And you need somebody like that, And he was much junior, but he had experience, He had experience in the field, and I was a greenhorn. And then I realized, and the operation lasted for more than 45 minutes. And in the 45 minutes, I used only close to about 2.5 magazines. And we killed about 6 militants in our group, out of which 2 to 3 were right in front of us, the two of us. So that's where, you have to maintain calm. But when the situation comes, it's, things go awry. But how fast can you get into it is what makes you a good soldier in the armed forces. And this is what we are taught, the harder you train in peace, the more you sweat in peace, the less you bleed in war. And I think we were successful because we didn't have a single casualty in that operation, which lasted for about 3 days. And we killed about 11 militants, but not a single scratch in any of my boys. And I'm proud to say in my complete career of the armed forces, I've not had a single scratch in any of my subordinates in any operation. We participated in many operations after that. That's amazing, sir. Superb. Because how so many militants you kill, but when you lose one boy of yours, that's much more painful. Amazing. Superb. Absolutely, absolutely. Because apart from the soldier, there's a family also associated with it, Exactly. So that's very important. And it's your good training which will make you, will ensure कि हमारा कोई casualty ना हो. मिलिटेंट मारना एक चीज है, और दुश्मन को वो करना एक चीज है, मगर अपना सिक्योरिटी रखना है. और यही हमें सिखलाई में भी बताते हैं, एकेडमी में भी, कि ट्रुप्स का ख्याल रखना चाहिए, अपने सबॉर्डिनेट्स का ख्याल रखना चाहिए. तो यही था ऑपरेशन जिसके लिए मुझे शौर्य चक्र मिला था. एंड इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी. ग्रेट सर, मेनी कंग्रेचुलेशन सर. दैट चेटवुड मोटो जो बोलता है कि टीम कम्स बिफोर यू, ऑफ कोर्स नेशन ऑलवेज कम्स फर्स्ट, देन कम्स टीम्स एंड देन योरसेल्फ. तो हाउ डू यू बिल्ड दैट camaraderie in the team? To what extent do you go actually to know that men and their family? Can you explain a little bit about that? See, that's the great thing about the Indian Army कि हमें पहले ये सिखाते हैं एकेडमी में भी, नेशनल डिफेंस एकेडमी हो या इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो, कि अपने जो जवान हैं उनका ख्याल रखना चाहिए. जैसे आपने बताया था चेटवुड मोटो, जिसमें बताया था कि देश पहला होना चाहिए, उसके बाद जो आपके अंडर जो सर्व कर रहे हैं, जो ट्रुप सर्व कर रहे हैं, उनका सेफ्टी, कंफर्ट, ईज, उसके बाद अपना खुद का देखना चाहिए. और इसके लिए आपको एक पर्सनल एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा.
पर्सनल एग्जाम्पल सेट करेंगे तभी एक ट्रस्ट बिल्ड होता है जवानों के साथ. एंड जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, देन दे विल ओपन अप एंड बी पार्ट ऑफ द टीम. एंड यू आर अ लीडर एज वेल एज पार्ट ऑफ अ टीम. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ हम लीडर हैं, तो आप एक टीम के हिस्से नहीं बन सकते. यू हैव टू बी कंट्रीब्यूटिंग एज मच. तो ये काफी हमें जब हम कश्मीर वैली में थे, तो कभी ऐसे होता था कि काफी वजन वगैरह उठा के ले जाना पड़ रहा. तो यू हैव टू कंट्रीब्यूट. हम तब यंग भी थे, तो काफी वेट भी उठा सकते थे. तो आप कैसे रोटेट करेंगे और सामान उठा के ले जाएंगे उनके साथ, आर्म्स अम्यूनिशन राशन वगैरह, तब वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है. फिर एक बार आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, और एक दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप. एंड वंस यू बिल्ड दैट ट्रस्ट इन योर ट्रूप्स, and then they are they'll do anything for the country and you. In fact, at times officers know about their team, the family they belong to, their wives, their kids, their parents, what problem they are undergoing, what is the type of financial situation back home they are in. All those things officers knows more about their team, and that is how they can depend upon. अगर किसी भी difficult situation में होते हैं वो, तो उनको मालूम है कि भैया हमारे ऊपर जो साहब बैठे हैं, they will be able to take care of us. बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला. एंड मैं ये हमेशा बोलता हूं, अगर एक लीडर के पास कोई जवान आके अपना मुश्किलात जो भी है वो, या प्रॉब्लम जो है वो नहीं बताता है, यानी कि आप लीड नहीं कर रहे. अगर आप लीड कर रहे हैं तो कोई ना कोई जवान आपको आके बताएगा कि साहब ये प्रॉब्लम है घर में. आपके साथ अपना पर्सनल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने के लिए आपके पास आते हैं. यही एक लीडर का खासियत है. एंड मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिले हैं. कितने लोगों के घर के घरेलू प्रॉब्लम्स थे, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्रॉब्लम है, या आपस में किसी का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो बेस्ट इज टू टॉक इट आउट एंड कम टू द लीडर. एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड द कोहेशन एंड द camaraderie. Sir, let's move ahead. From militants area, you move to Bhutan. Altogether a different arena, a country which is known for its peace. So from somewhere where the peace is nowhere near to somewhere where it is all around peace. So do you think that posting to Bhutan actually gave you some purpose in life? Well, absolutely. After Valley, I served across India in various appointments and various places in India. But I got an opportunity pretty young in service to serve in Bhutan as part of the Indian military training team to train the Bhutanese army. And it was an eye-opener for me. Like what you said earlier, I tried to imbibe the culture by the language, their ways of living. And one of the things that they believe in is called gross national happiness. और उनका जो राजा है, His Majesty the Fourth King, उन्होंने यही बता रहे थे कि प्रजा जब तक खुश है तब तक देश सही है. Till the time the subjects are happy, that means the country has made progress. It's not only gross domestic product which is a indicator of a country's success. And I was there during a very very crucial time, because this was when monarchy was being the country moved from monarchy to democracy. And वहां काफी कुछ सीखने को मिला. और जो मेन लेसन्स में जो वहां सीखा था कि वहां कंपैशन, वो बुद्धिस्ट नेशन है, वहां कंपैशन और हैप्पीनेस में लोगों को वहां हमेशा खुश रहते हैं. वो लोग जितना भी है उनके पास, वो खुश रहते हैं. तो ये मेरे एक ह्यूमन नेचर में एक बदलाव लेके आया था. So I then realized that how much compassion is important, how much is happiness more important than money and post and ranks and things like that. So that definitely made a huge change. And slowly I imbibed their culture and things like that. And the countries themselves are a great epitome of friendship. We have more than 50 years we have diplomatic relations with them, but we are very very close friend. जब भी बोलते हैं कि इंडो भूटान फ्रेंडशिप बोलते हैं, तो वो फ्रेंडशिप और जो हैप्पीनेस है वो काफी इम्पैक्ट किया है मेरे जिंदगी में, सर्विस में भी, और सर्विस के बाद जो अभी मैं जो चीज कर रहा हूँ उसके लिए भी काफी इम्पैक्ट हुआ था मुझे. तो बात करते हैं सर, अभी आप क्या कर रहे हो? What is that new thing which is motivated by the compassion which you learned from Bhutan? What is that work? Please throw little light on that area.
See, okay, after Bhutan, I served in a couple of places. Then I commanded a unit in the eastern sector. And that's where I noticed, a lot of Jawans and officers were they were dying because of non-operational circumstances. Army में तो ये मेरा एक टास्क था एज अ कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द यूनिट की ऐसे कितने ऐसे कैजुअलिटीज हो रहे हैं अपने इलाके में और किस कारण हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट तो और मैं एक एयरपोर्ट के पास भी था तो मैं आई यूज्ड टू हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डेड बॉडी एंड रिसीव द नेक्स्ट ऑफ किन एंड थिंग्स लाइक दैट so that's when I realized that there's a lot of such Indian army personnel who die because of non-operation reasons. Operation reasons like terrorist action हो गया, war हो गया, border skirmishes हो गए. इसके अलावा भी जैसे accident हो गया, medical conditions हो गए, suicide हो गया, fratricide हो गया. तो जब मैंने इसमें थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, I started doing a little study to find out how many such people die every year, what happens to their families, what is their status of their children, their parents, and things like that. I was really surprised and shocked that we lose about 1,200 to 1,500 every year. And these are called physical casualties, whereas we lose about 80 to 90 per year on battle casualties. And that's when I realized that, I need to dedicate myself to the welfare of these families. The Indian Army as an organization has got a lot of efforts they put in to make sure that the families are looked after. But there is definitely a gap. So I said, okay, let me take premature retirement. I retired after 20 years of service and embarked on a purely philanthropic one-man project called Project Sambandh, where I wanted to connect with the next of kin, यानी कि families, spouse हो या parents हो या बच्चे हो, उनके फिजिकल कैजुअलिटीज के नेक्स्ट ऑफ किन के साथ एक संबंध बनाना. इसीलिए मेरा प्रोजेक्ट का नाम है संबंध. उनसे कहाँ है वो, अभी क्या कर रहे हैं. तो इसके कारण आई एम्बार्क्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट. आई बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट 3 years. I travel across India meeting these widows and children and parents and finding out what are their requirements, what are they doing now. Many a times is lack of awareness. The army has got a lot of schemes for them. I try and explain the schemes for them. And there's a language barrier and, a lot of bureaucracy. I can do what I can do. So, I try and at least make a connect with them. And that's why the project is called Project Sambandh. So that keeps me busy post-retirement. It's very busy. So that keeps me busy. Project Sambandh keeps me busy. Sir, it is important to understand what is the difference between a war casualty or a battle casualty and a physical casualty. और साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि उनके एक अगर कोई फिजिकल कैजुअलिटी है तो उसकी फैमिली की लाइफस्टाइल में क्या ऐसे बदलाव आते हैं which you don't see in the family who's actually affected because they lost the husband in a war zone or a battle. What are the differences? Can you throw a little light? पूछा है ये बहुत ही it's a very pertinent question. Battle casualty उनको बोलते हैं जैसे जो war या टेररिस्ट एक्शन या बॉर्डर स्कर्मिशेस ऑपरेशनल एरिया में जिनका डेथ हो जाता है. फिजिकल कैजुअलिटी जो बोलते हैं जो सर्विस के दौरान जिनको बिन लड़ाई कारण, जो 4 कारण हैं उनके. फर्स्ट इज मेडिकल कंडीशन, कोई बीमार पड़ गया, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, निमोनिया हो गया, उसके कारण जो डेथ हो जाता है. दूसरा एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कुआं में गिर जाता है या कोई इलेक्ट्रिक्यूशन हो जाता है. थर्ड है खुदकुशी, सुसाइड. और चौथा है फ्रैट्रिसाइड, व्हेन वन सोल्जर kills another soldier either by firing or some other means. These are called physical casualties. And इनके जो families हैं, दोनों के families का issues nearly same है. Basically the 3 challenges that they have are financial, social and emotional challenges. Both the next of kin of battle casualties and physical casualties. But whereas the next of kin of the battle casualty, financially they are a little better off in the sense that they get 100% pension, which is the same salary which the soldier would have got. Their children's education is completely taken care by the government of India. And also they have a little bit of employment reservation and they have a preference in employment for the widow or the next of kin. Whereas in a physical casualties next of kin, the biggest challenge is financial. The first challenge is financial because
Suddenly, from the salary, it becomes either 30% to 60%. That's what they get as pension. And children's education is completely affected. That's not taken care by the government, and they have some grants, but it's not completely taken care. And there's also challenges of accommodation, where to stay, and then of course you have the emotional and the social challenges. ऐसे मैंने बहुत सारे नेक्स्ट ऑफ किन से मिला हूं मैं. ऐसे एक उदाहरण से मैं बता सकता हूं कि एक बार सुंदर बनी गया था मैं, जम्मू कश्मीर में. वहां एक नेक्स्ट ऑफ किन से मिला था मैं, who had lost her husband just 2 years into marriage, 2 ही साल हुआ था शादी होके. एंड सुंदरबनी है जम्मू कश्मीर में. ये सुंदर बंस नहीं है जहां टाइगर्स मिलते हैं, ठीक है ना. जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे ये सुंदर बंस, ये सुंदर बंस नहीं, ये सुंदर बनी है जम्मू कश्मीर में. और यहाँ तो उनसे मिला था मैं. तो then I saw that, with just 2 years of marriage, this lady has lost her husband. She's got a girl child, and the man died because of some medical condition. एंड ये इन लॉज के पास भी नहीं थे, ना मदर के पास, उनके पेरेंट्स के साथ अकेली रह रही थी, ना इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी. उसके बाद उसने पढ़ाई किया, विडो ने पढ़ाई किया, टीचर का जो भी बीएड किया उसने. फर्स्ट शी वाज डूइंग ग्रेजुएशन, उसके बाद उसने बीएड किया. बच्चे को भी अच्छे से पढ़ाई किया. तो मैं जब इस लेडी से मिला था, दिस वाज इन 2018, and she was in ninth grade at that time. And I spoke to this girl and I said, what are you doing and which class are you? And in flawless English, she said, uncle, I'm in ninth standard and I want to be a cardiologist. मैं तो हैरान हो गया कि cardiologist, wonderful, such a small place, Sundarbani, no father, single mother, and they were not aware of the government schemes and all that. I helped them fill up the forms and all, but that's just a minor part. But then I saw the potential in this girl. I spoke to my friends and families. People said, yes, they will support. And sure enough, in 2019, she, in the 10th standard exam, she got 480 out of 500. Can you imagine being in a place like Sundarbani with no coaching, nothing? And I knew she's got the potential. And we said that, okay, she's not going to be in Sundarbani. She has to move to Jammu because the competition is tough. So now she is in Jammu and studying for her, medicine entrance exam, as well as 11th and 12th. And her mother has also moved to Jammu. And my friends and families are supporting, financially, as well as some mentorship. A couple of my friends are doctors. They are telling her how to prepare. So, हर संबंध में एक story होता है. And many of these stories are, uplifting stories, but there are also stories which are, you feel that, oh, what's happened to the society and the system and things like that. But this is one story where I was myself was really inspired, and this is what keeps me going and makes me do the never say die spirit, is because of these next of kin who, in spite of all these challenges, are doing so well. And here I was an army officer with all the facilities and drawing pension. So that's the reason why I'm into this project. And I spend my own money. This is no NGO or nothing. It's a philanthropic aspect. So I spend my time, my money, and go there. But the returns, people ask me, इसके लिए क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलना चाहिए मुझे. ये जो खुशी मिलती है मुझे is it cannot be measured in terms of money or awards and things like that. This is in a different league altogether. वो कुछ बोलते हैं ना कि जो ऐसा गुड़ खाता है उसको उसी को उसकी मिठास पता चलती है. So the materialistic things cannot get you those emotions, those positive vibes what the good work can get you. But absolutely. I want to ask you, sir, that how do you visualize the gaps which you just mentioned are there? Reaching out and meeting the families is the biggest gap. लेकिन और कौन से ऐसे गैप्स हैं और उन गैप्स को हम कैसे प्लग कर सकते हैं? What's your suggestion? See, gaps are there. The gaps are mainly social issues. Army as an organization काफी ख्याल रखता है अपने next of kin and families को. But क्या हो जाता है जब जवान का डेथ हो जाता है, that is the time when they look after. First 6 months, 8 months, जब तक पेंशन शुरू होता है. उसके बाद slowly because of some social reasons. Because generally वो विडो इन-लॉज के पास जाती है जो गांव में रहते हैं, और पढ़ाई भी उनको फिर कंटोनमेंट स्कूल से कहीं विलेज स्कूल में जाना पड़ता है बच्चों को.
जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, फॉर एजुकेशन रीजन दे हैव टू गो आउट टू better town or a city, and then slowly the gap increases between the organization, which is the army, and the next of kin. And the next of kin also thinks that the army cannot help them, but actually the army can help them in a lot of ways. The units can help them, and it's not all about scholarships or money and things, that even small things of keeping in touch, some career counseling can be done. People can get back into the system by their children getting in as recruited into the army. तो ये सोशल गैप्स है. तो हमें ये है कि पहले तो ये विडोज हैं, इनको वो जो जवान के साथ जो स्टिग्मा है उसको निकालना चाहिए. जवान अगर खुदकुशी कर लिया है तो वो स्टिग्मा कंटिन्यू करता है. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ऐसे एक एग्जाम्पल है, चेन्नई के ही हैं वो. उनका डेथ हो गया था सुसाइड में. उसने जवान ने सुसाइड कर लिया था. काफी प्रॉब्लम्स फील्ड एरियाज में उसको था, तो उसने सुसाइड कर लिया. मगर अभी भी वो स्टिग्मा ना ही विडो में मगर बच्चों में भी है कि योर फादर कमिटेड सुसाइड, बट रीजंस लोगों को पता नहीं कि क्या रीजन से हुआ था, और ये कंटिन्यू होते जाता है. तो उनको कैसे काउंसलिंग करें, उनको उस शेल से कैसे निकालें, ये सब चैलेंजेस हैं. एंड यही गैप्स है जो एड्रेस करना चाहिए. ऑल गैप्स आर नॉट फाइनेंशियल गैप्स. हम यही सोचते हैं कि अगर कोई तकलीफ है तो पैसा दे दो, पैसे से हर चीज सॉल्व नहीं होता. ये ऐसी चीजें, उनका मोटिवेशन करो. जैसे इस लड़का है, इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि मोटिवेट करें, उस शेल से निकले, अच्छा सा पढ़ाई करे. ऐसा बड़ा सिटी है, चेन्नई जैसे बड़ा सिटी है वो, एंड वो जवान एक अच्छी यूनिट का था, तो यूनिट के साथ उसका भी संबंध हो गया है. हो सकता है कि कल वो भर्ती होके उसी यूनिट में ज्वाइन करे. तो ये खुशी होगी कि तब वो थोड़ा थोड़ा वो जो दाग नहीं बोल सकता हूं, मगर वो स्टिग्मा है वो निकाल सकते हैं. तो यही गैप्स है, सोशल गैप्स है. नॉट ऑल गैप्स आर फाइनेंशियल. एंड इमोशनल गैप्स के लिए काउंसलिंग, रीचिंग आउट करने से सब कुछ हो सकता है. तो अगर हमारे जो लिसनर्स सुन रहे हैं, अपने अगर फौजी लिसनर्स हैं, अपने यूनिट के फिजिकल कैजुअलिटीज के नेक्स्ट ऑफ किन को आप रीच आउट कीजिए, उनसे पूछिए. और अगर कोई वेटरन्स हैं और कोई गांव से आप ये सुन रहे हैं, तो आपके गांव में भी ऐसे होंगे नेक्स्ट ऑफ किन को रीच आउट कीजिए, और फिर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं. वेरी ट्रू. आई हैव विजुअलाइज्ड दैट हमारे देश में अभी भी जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रॉमा का कॉन्सेप्ट और ट्रॉमा के इम्पैक्ट का कॉन्सेप्ट, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. It is not necessary that a person who has taken a step of suicide is because of some personal internal turmoil, but that internal turmoil can be because of his exposure to militancy affected area, because of his exposures of so many killings which he has seen all around, or there are n number of reasons, because every human being has his own psyche to control. So that PTSD thing is yet not being accepted and embraced in our country in the manner in which it should be. Till that time it happens, I'm glad that people like you are trying to pitch in and filling those emotional gaps. So do you wish to suggest that how do we fill that emotional arena at unit level, at society level, at country level? What is your suggestion on that? बिल्कुल, आप यू जस्ट हिट द नेल ऑन द हेड. फर्स्ट वी हैव टू एक्नॉलेज देयर इज अ प्रॉब्लम. अगर हम उसको कारपेट के नीचे डालते जाएंगे तो देन वी कैन नेवर सॉल्व द प्रॉब्लम. पहले तो एक्नॉलेज करो. नंबर 2, हर चीज को एक गहराई से पढ़ना चाहिए. देयर शुड बी अ कंप्लीट स्टडी ऑफ व्हाई पीपल कमिट सुसाइड एंड व्हाट आर द अदर रीजंस, डिप्रेशन एंड थिंग्स लाइक दैट. और आपने सजेशंस मांगा था, मैं एक चीज हमेशा खुद फॉलो करता हूं, वो है कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स. हम क्या कर सकते हैं? हम संबंध बना सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं. बातचीत से ही काफी चीज आप सॉल्व कर सकते हैं. आप रीच आउट कीजिए. हो सकता है 10 साल हो गया है जवान का डेथ, फिजिकल कैजुअलिटी हो गया है, मगर आप रीच आउट कीजिए. पहले आपको हो सकता है आप गाली सुनेंगे नेक्स्ट ऑफ किन से, मैंने बहुत सारे सुने हैं, बट इट इज अ नेचुरल रिएक्शन. वो सोचते हैं अभी इतने साल कहां थे आप लोग, मगर उस स्टेज को आप पार कर देंगे. वो अभी सोचेंगे हाँ, मेरा यहाँ एक सहायक है जो मदद करेगा, मेरा एक साथी है जो मदद करेगा, मेरा एक सहेली है जो मदद करेगी. तो आप प्लीज रीच आउट कीजिए.
वो थोड़ा गुस्से में होंगे इनिशियली, बट आप रीच आउट करेंगे, उनके साथ संबंध बनाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, आपके लिए भी एक फुलफिलिंग चीज होगा, और उनके लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट है, एंड तभी वो शेल से निकल सकते हैं। वही मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद और बाकी लोगों को इंस्पायर करने के लिए। मैं टॉक्स देता हूँ, लोगों को बताता हूँ, लाइव एग्जांपल्स बताता हूँ, एंड वो कैसे निकल के आ सकते हैं, और उनके बीच में भी एक पीयर ग्रुप बना के मैं बोलता हूं कि एक दूसरे बातचीत कीजिए। आप हो सकता है आप आपस में सीख सकते हैं जो मैं नहीं बता सकता हूं बाहर से। तो यही कोशिश है। तो जो सुन रहे हैं प्लीज रीच आउट कीजिए, अपने आप चीजें सेट हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप, प्लीज रीच आउट। वेरी ट्रू। एंड ऑल्सो दिस इज टू बी एक्सेप्टेड कि अगर बाई चांस किसी जानबूझ के की हुई गलती से भी वो सोल्जर ने कोई ऐसा कदम उठाया जिसके कारण वो आज इस धरती पे नहीं है, दैट डज नॉट मीन दैट उसकी फैमिली या उसके बच्चों को सफर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। वो अनफॉर्चुनेटली स्टिग्मा कैरी हो जाता है। मैं काफी अथॉरिटी से भी बात करता हूँ, ओ उसने तो दारू पी के मर गया। वो बंदा दारू पी के मर गया, वो जवान दारू पी के मर गया, मगर उस फैमिली की कोई गलती नहीं है ना। फैमिली इतना सैक्रिफाइस किया होगा जब वो जवान सर्व कर रहा था। तो हम उस सैक्रिफाइस जो फैमिली करते हैं वो दुगना है। there's two times the sacrifice that the soldier makes. Soldier एक फील्ड एरिया में है, एंड बच्चों को पढ़ाई कराना, सब कुछ कराना एक फैमिली करते हैं। तो प्लीज उसको जोड़िए मत, एंड उनको ट्रीट कीजिए। फैमिली इज नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ अ फिजिकल कैजुअलिटी और अ बैटल कैजुअलिटी, बोथ अंडरगो द सेम इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। सो एब्सोल्युटली आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया कि उससे दूर रखिए। जो कॉज है, खुदकुशी है या कोई गलत चीज के कारण उनका डेथ हो गया है, तो उसको फैमिली से दूर रखिए आप। अच्छा सर, सच में बताना, द वर्क विच यू आर डूइंग इज एक्चुअली नॉट दैट इजी। डोंट यू फील फ्रस्ट्रेटेड एट टाइम? एंड इफ यू एक्चुअली फील फ्रस्ट्रेटेड, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड ऑन इन दोज पर्टिकुलर मोमेंट्स? क्या करते हो आप? तो बिल्कुल सही है, बिकॉज मैं जब विडोज या कोई इंडियन आर्मी या पर्सनल या उन अथॉरिटीज उनके साथ बातचीत करता हूँ, पहले बताता हूँ कि ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मैं। Many a times I've encountered people abusing me, especially the family, saying that where were you all these years? Then they realize that I'm not the official armed forces personnel who's reaching out, and I'm just doing it as a philanthropic measure. And many a times bureaucracy takes over, and forms, and they don't understand the situation or the urgency of the next of kin and the families. And then that's when you need to have I follow a couple of mantras myself, and one of the key mantra is control the controllables. This is being taught to me my friend who's also an honorary lieutenant colonel in the army, and many people would know him as a cricket captain, former cricket captain of India, MS Dhoni. And he is something that I've learned from him, that is control the controllables. You do what you can. You cannot control ki armed forces authorities kya karenge ya baki log kya react karenge. आप कैसे उस प्रोसेस को अप्रोच कर सकते हैं। और दूसरा जो चीज मैंने उन्हीं से सीखा है वो है प्रोसेस। प्रोसेस में आप ध्यान दीजिए। keep if your processes are right, the results more or less will come out correctly. Out of 100 times there will be a couple of times when it won't come out well, but if you don't follow the process, then you will find that many a times you'll get frustrated. So if you are following the process right, सो मेरा क्लियर, अभी इतना 3 साल हो गया ये करते करते, अभी मेरा प्रोसेस बहुत स्ट्रांग हो गया। कैसे अप्रोच करना चाहिए नेक्स्ट ऑफ किन को, कब अप्रोच करना चाहिए, उनसे कैसे बातचीत करना चाहिए, क्या डेटा उनको बताना है, आर्म फोर्सेस अथॉरिटीज को कैसे बातचीत करना है, उनको कैसे डेटा मैच कराना है, उनको जो वेलफेयर है। तो ये प्रोसेस मेरा सेट हो गया, एंड इसके लिए टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी में बहुत जोर देता हूं मैं, क्योंकि तुरंत आप एक चीज को दे सकते हैं। ये नहीं कि उन्होंने फोन करके पूछा कि इसका फॉर्म भेजिए, आप बोले मैं भेजता हूं और अभी तो लंच टाइम है। हमारा तो कोई लंच टाइम वगैरह नहीं है, इसमें आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर ऐसे कोई क्वेरी आता है तो हम सेकंड्स में वो भेज सकते हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस किया है। तो फ्रस्ट्रेशन तो होता है, मोटिवेशन के लिए वही है कि that spark comes in, and people then talk about it, and you get to hear from others
कि यार ऐसे ऐसे था। इनफैक्ट कल परसों भी ऐसे हुआ है कि मेरा कोर्समेट कोई दिल्ली में कोई टैक्सी में बैठा हुआ था और वो ऐसे बातचीत हो रही थी, तो उसने बोला कि मेरे पापा हैं गढ़वाल रीजन में 89 ईयर्स ओल्ड के, वो कोई कर्नल साहब के बारे में बात कर रहे हैं जो फैमिलीज के कर रहे थे, मैं भी उनको मदद किया। तो इस कोर्समेट ने पूछा ये क्या कर्नल साहब का नाम बिंबू शंकर है? तो वो ड्राइवर सडनली गाड़ी रोक के ना, ये रात की बात है, तो वो बोल रहा हाँ हाँ वही है वही है। तो हमारा फिर बातचीत हुआ था। तो ये सब दिस इज समथिंग दैट Amazing. मोटिवेट टू गो अहेड कि कोई कहाँ गढ़वाल रीजन में 89 ईयर ओल्ड Right. एक्स सर्विसमैन मेरा नाम जानता है और मेरा काम के लिए वो कर रहा है, Great. तो और मोटिवेशन मिलता है कि और ऐसे लोग जुड़े और काम करें। Wonderful, sir. You are amazing, sir, and I know that you are one man army. So how do you manage the show running? Because at times, single man, don't you find difficult running all the things alone? See, why I say it's a one man this thing is because I don't have any organization, I don't have an NGO and things like that. But it will be wrong on my part to say that I don't have support. I have the support of the whole Indian Army. I've got the Right. support of the organization. I've got the greatest support of my coursemate. Indian Army में एक Directorate of Indian Army Veterans है, जो यही उनके पास काफी फंड्स है जो मदद कर सकते हैं। हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है उनको देने के लिए, बट उनके पास पैसा है, वो काफी मदद करते हैं। वो मुझे भी काफी उन्होंने अचीव करने के लिए ट्रेनिंग दिया है उन्होंने, और काफी पॉलिसीज में उन्होंने मुझे बताया है कैसे बात करना है। उनका जो लर्निंग्स है इतने सालों से कर रहे हैं वो कोर्समेट्स है। सबसे ग्रेटेस्ट एडवांटेज है मेरा मेन 3 खर्चा होता है कि ट्रैवल होता है, एक फूड होता है, एक स्टे होता है। ट्रैवल एयर में जाना है तो काफी महंगा हो जाता है, तो हम एक लिमिट रखा है। बट कभी कभी ऐसे है कि हम कोर्स में जा जाते हैं, एयरपोर्ट से मुझे पिकअप कर लेते हैं, उनके साथ खाना खा लेता हूँ, उन्हीं के साथ उनके घर में रह जाता हूँ। और ये सब कैमराडरी सिर्फ कोर्समेट्स जानते हैं। एंड इसके अलावा पब्लिक भी, यू वुड बी सरप्राइज्ड, the public are amazing. I mean, the respect that they have for the armed forces is amazing. If you tell them how to help and who the right people to help, they're more than willing to help, whether it's financial help, whether it's any professional help. बहुत सारे लोग हैं, लॉयर्स हैं जिन्होंने काफी मदद किया है, कोई लिटिगेशन में, कोई काउंसलर्स हैं, बच्चों को बताया है कि 10th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है। कोई न्यूट्रिशन है, कोई डॉक्टर्स हैं जो अगर ECHS वगैरह काफी दूर पड़ जाता है तो डॉक्टर बोलते कोई नहीं, हमारे पास भेज दीजिए, हम चेकअप कर लेंगे। तो सपोर्ट बहुत है। बताने के लिए वन मैन आर्मी है, बट हम 1.5 बिलियन, वो जितना भी इंडियन का पॉपुलेशन है वो मेरे पीछे है, एंड वही मेरा स्ट्रेंथ है। You spoke about कोर्समेट, ये बिल्कुल एक अलग ही फ्रेटर्निटी है जिसके बारे में वही जानता है जो फौज से निकला है या जो फौजी है। But I know that your course-mates call you Forrest Gump. What is that story and how do you feel, जब ये नाम सुनते हो आप अपने बारे में? फॉरेस्ट गंप भी फौजी था, तो मे बी दैट इज दी और आई थिंक फॉरेस्ट गंप थोड़ा ढीला भी था, तो मैं भी ढीला ही हूँ। और फॉरेस्ट गंप काफी लोगों से, सेलिब्रिटी से मिलता था, तो मैं भी वो। बट फॉरेस्ट गंप का एक वो चीज है कि वो स्टोरी, कहानी बताता था अपना। उसका स्टोरी है फॉरेस्ट गंप का ये है कि वो जो भी बगल में बैठा था उनको अपना कहानी सुनाता था। तो इसलिए मैं भी मुझे फॉरेस्ट गंप बुलाते हैं, क्योंकि मैं भी कोई भी चीज है उसका कहानी बता के उसको बताता हूं मैं लोगों को कि ये है। बिकॉज नंबर्स और डेटा बताने से लोगों को इम्पैक्ट नहीं होता इतना। तो जब मैं उनको कहानी बताता हूँ, कोई एग्जाम्पल का, कोई नेक्स्ट ऑफ किन का जो हमने मदद किया है या किसी ने मदद किया है और उनकी इम्पैक्ट कैसे हुआ है, तो मे बी फॉर मेनी रीजंस मुझे फॉरेस्ट गंप बुला रहे हैं, बट मैं ये पॉजिटिव रीजन ले लूंगा कि क्योंकि मैं हूँ और लोगों को बताता हूँ। और मैं दौड़ नहीं सकता हूँ जैसे फॉरेस्ट गंप दौड़ता था, थोड़ा बहुत टीटी खेल लेता हूँ, और मगर वो भी फौजी था, मैं भी फौजी हूँ, तो ये कनेक्ट है। Wonderful, sir, amazing. I want to know who is Shankar as a person. एक इंसान जो शंकर है वो क्या है? Well, see, I grew up in a middle class family, no armed forces and things like that. My requirements are very less, and so I've been having a lot of hobbies right from my childhood. I've had great 3 people who make a lot of difference in your life. I always tell people are your parents, then your teachers,
and then your friends. I've had great set of parents who have encouraged me. The whole family has encouraged me, whatever decisions I've taken. Teachers have been amazing, but parents and teachers are some people that you cannot control. But friends are some people that you can control. तो हमने अच्छा friends choose किया है, उसके कारण अभी भी friendship है. And as a person, I've been indulging a lot of hobbies. I've been doing quizzing, थोड़ा बहुत मैजिक कर लेता हूँ मैं. ऑटोग्राफ मेरा काफी खास हॉबी है. मैं ऑटोग्राफ कलेक्ट करता हूँ सेलिब्रिटीज. पहले जमाने में चिट्ठी लिखता था, फिर फौज आने के बाद चिट्ठी नहीं लिख पाते थे, फिर लोगों से मिलता था, उनका ऑटोग्राफ ले लेता था. And that is an interesting hobby that I have, where I could meet a lot of personalities, and you will be surprised that most of these celebrities are pretty humble, and a lot of lessons that you can learn. And with the autographs, you're actually having a piece of history in your hand. So, and I lead a pretty normal and decent life, and I'm happy with it, and I live day by day and minute by minute, and for the moment and the present. You're being very humble. I must tell audience that सर के घर में एक पूरा कमरा जो है, that's a museum full of all the pictures which is being autographed by the personalities, all the books and such stuff. There's one part of the house is dedicated totally for that museum. And in that collection, I've got your book, Grit, which is a great book for, as a motivation, autographed by you, personalized, which is a very, very dear part of my collection. And I show it to children, and this is being my standard birthday gift now for children, because I grew up reading comics, and, that is the way we got inspired. And I think that's a great story of yours, which can inspire a lot of youth and younger generation. I'm humbled, sir. I'm honored with your words. So to end, I want that you should say something to the youngsters of our country also. And in particularly, how compassion and empathy can make our country a little more beautiful. What's your message for the youngsters? Well, I'm too young myself to give a message to the youngsters, but still out of experience in dealing with these people, I can tell you that the more you help, because in Scouts when I was there used to be a motto of be prepared, and we used to be told that do a good turn every day. So you can start by doing a good turn every day with your family, with your friends. And I can tell you that the kind of satisfaction that you will have, the experiences that you will have, can never ever be taught in conventional education by going to a school or college. The more time you will spend with your own, elders, with people like this who have been disadvantaged, whether it's armed forces people's families, armed forces people themselves, or somebody in the civil society also. There are people who have been disadvantaged because of various reasons. It could be because of some accidents. It could be because of some social reasons. So please spend time with them. Nothing you need to do financially, but if you can spend time, it will make you a better human being, number one. And the experience that you will gain will definitely help you in your professional career also. And you'll become a better partner, and a better son, better father, better partner. And I think this is an important thing that you can start right now, right today. Thank you so much, sir. Thank you for coming on the show and enlightening us with the good work which you are doing and a great message which you have left for the youngsters. We wish you all the best, and I am sure Project Sambandh के जो संबंध हैं वो ना सिर्फ स्ट्रांग और घनिष्ठ होंगे, बट सक्सेसफुल भी होंगे आने वाले टाइम में. जय हिंद. Thank you very much. Jai Hind, Major DP, and मुझे भी अच्छा लगा. It was a great opportunity for me to come and talk to you. You are an inspiration for me. And my appeal to everyone who's seeing the show, get in touch with Project Sambandh and see how you can make a difference in the lives of so many people who are near and dear to you. Thank you very much. Jai Hind. So listeners, ये थे कर्नल वेम्बू शंकर शौर्य चक्रा. एक इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है. So as somebody has mentioned that don't think कि देश आपके लिए क्या कर रहा है, but think that what you can do for the country. And for that, you need to just take one step at a time and have that attitude of never say die. Till we meet next time, take care of yourself. God bless you. Jai Hind. Bharat Mata ki Jai.